Subscription. Subscription, you all know, is very, very important. Subscription is the regular source of income. Is a regular source of income for NPO. And I told you on that day to know about the subscription of the current year income of NPO for a particular year. Outstanding subscription at the beginning of the year, which is actually the outstanding subscription of the previous year, is added. Once again, you note down outstanding subscription at the end of the current year, because it is not received yet. Outstanding subscription of the current year, because it is not received yet, it should be added. And advance received at end means advance subscription received at the end of the year, means in the current year if some advance is received, it is of the next year. So next year advance will be subtracted from the current year subscription, because it is not of the previous year. It is a very, very important concept or point, you can say, which you have to focus. So this 4 treatments of subscription is very, very important. These are the most important one, these 4 treatments, and you should uh, take note of this, that whenever you find the subscription of the current year, subscription money to be received during this year, income from the subscription in the particular year, these 4 things should be, adjustments should be done. Is it clear? Keep your cameras on. I have told you many a times, keep your cameras on all the time. It should not be off, or you should not join the class. Now, what we have to do in a full length question, these are the small points. These are the small points, different, which will be used in a full length question. The full length question starts from question number 12 or 13, I think. Take out. It starts from question number 19, 18 or 19 in different books. I have this book. Preparation of income and expenditure account. Preparation of income and expenditure account. I would like to explain this illustration for you so that you will be able to know what we have to do when we want to do a full length question. Keep your cameras on. Harshit, Vansika, Ravi.
Anybody who goes off camera, I will remove you from the class. क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है. फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब. Illustration: receipt and payment account of Modern Club, New Delhi, for the year ending 31st March 2019. Everybody got the question? Illustration number 19 है इस बुक में, आपके में 17, 18, whatever it is, you check. In this question, the receipt and payment account for the year is given to you. Receipt and payment account for the year is given to you. You can start. Balance brought down 2,300. I hope you have got the question. Then subscription is 56,400. Interest 300. Donation for building fund, match fund, miscellaneous receipt, and sale of grass 100 rupees. On the payment side, you can see match expenses 6,800, rent, salaries, sundry expenses, investment purchased, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड बैलेंस. तो पेंसिल लीजिए अपने हाथ में और सर्कल कीजिए सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1/4/2018. बैलेंस ब्रॉट डाउन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सबसे पहले सर्कल कीजिए फर्स्ट आइटम बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1/4/2018 2,300. यह है ओपनिंग बैलेंस. सर्कल कीजिए क्लोजिंग बैलेंस. बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 31st March 2019. इसको भी सर्कल कीजिए. कम टू द एडजस्टमेंट. नीचे एडजस्टमेंट्स में आइए. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018. पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है. दिस इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 4,000 एंड 31st March 2019 इट इज 6,000. यह है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड. और पीछे था आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग. उसके बाद है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग 31st March 2018 एंड 2019 दे रखी है 2,000 एंड 2,500. उसके बाद दे रखा है आपको assets and liabilities which the NPO had during the previous year. इस साल के बिगिनिंग में या पिछले साल के एंड में 31st March 2018 को क्लब है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है 12,000, फर्नीचर 10,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000. हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट बिफोर दैट we have to prepare a balance sheet of previous year. We have to prepare a balance sheet of previous year. 31st March 2018 की एक बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें पिछले साल की सारी असेट्स और लाइबिलिटीज लिखेंगे. So all of you look at the solution. अभी आपको हमने अंडरलाइन करवाया था, सर्कल करवाया था बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है वो. दिस वाज द कैश ऑफ द प्रीवियस ईयर, ओपनिंग कैश. तो वो आपका बैलेंस शीट में असेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे आप. दैट विल बी द फर्स्ट आइटम ऑलवेज you will write in the balance sheet. All of you prepare a balance sheet right now in front of me. कैमरा थोड़ा दूर करिए, मुझे कॉपी पेन दिखना चाहिए जिसमें आप लिख रहे हैं. कॉपी पेन सामने रखिए एंड डू द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ मी. सिट प्रॉपरली. It should be visible to me what you are doing.
वंशिका कैमरा सही करो. And all those who are not in school dress, tomorrow onwards, keep in mind. Jasanjeet, keep the camera on. वंशिका शर्मा कैमरा डाउन करिए. Everybody should be in school dress from tomorrow onwards. Otherwise, no need to join the class. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. मैं आपको फुल लेंथ क्वेश्चन का आज एक आइडिया दे रहा हूं. ये आज जाके एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए. सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर. पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं. माइंड इट. इसमें बन रही है एज, कब की बन रही है ये? 31 मार्च एज एट whenever you make a balance sheet, the opening balance sheet, बेटा ध्यान रखें क्या बता रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा स्टार्ट होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस के साथ. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस के साथ. प्रिंसिपल लिसनिंग. ये रहा ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. Always it will start with the opening balance of cash. So you write there cash. Yes, sir. How much cash? 2,300. उसके बाद हमेशा ढूंढिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट में आपके दिया हुआ है. Outstanding subscription of previous year is given in the adjustment. How much it is? Vansika, how much it is? Of previous year in the adjustment it is given, and it is given 4,000 2018 का outstanding subscription. उसके बाद कुछ असेट्स दे रखी है आपकी पिछले साल की असेट्स लिखा है ना. ऑन 31 मार्च 2018 एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये सारी असेट्स हमारे पास थी. कौन कौन सी थी? इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. तीनों चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई है एडजस्टमेंट में. इन द एडजस्टमेंट्स दे आर गिवन. ये सब आपको वहां से कॉपी करने हैं. द चैप्टर इज सिमिलर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट. बस आपको इसमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी जैसे आपने अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी बनाई थी. एक ओपनिंग बैलेंस शीट जिसमें आप क्या बना रहे थे? कैपिटल फंड निकाल रहे थे. वैसे ही आपको इसमें निकालना है. ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल उसमें निकाल रहे थे, इसमें आप निकालेंगे कैपिटल फंड. सो इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका आ गया 12,000, 10,000, 20,000. उसके बाद यू हैव सम लाइबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर, दे रखी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000.
टोटल है आपका 48,300। 48,300 में से ये 2,000 माइनस किया कैपिटल, this is the balancing figure 46,300. 46,300 is the balancing figure. 46,300 is the balancing figure. ये जो 46,300 आया है ये आपका कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड। In every full length question of NPO, the first step will be to prepare a balance sheet to know exactly what is the capital fund in the beginning. जब ये आपको पता चल जाएगा फिर आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, and then you will prepare the closing balance sheet. Then you will prepare the closing balance sheet. Is it clear to everyone? Ansika? Is it clear? Okay, you should raise your hand in yes or no. Rini, is it clear? Okay, all those who are there, first you have to prepare this opening balance sheet, Prince. It always starts with the receipt and payment account opening balance of cash. एक और मैंने आपको अंडरलाइन करवाया उसमें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट में, आपको एक लास्ट में अंडरलाइन करवाया ना, बाय बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस है। दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बी शोन इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब आप एक लास्ट वाली बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग, ये आप उसमें शो करेंगे। अब जो है बाकी का क्वेश्चन जो है, अपनी बुक अपने पास रखिए एंड जस्ट सी कौन से आइटम को कहां पर क्या ट्रीट करना है आपने। ऑलवेज स्टार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द क्रेडिट साइड। कम टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। See what is written there. Income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. Okay. सबसे पहले सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट लेना है आपने। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड पे फोकस कीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड पे फोकस कीजिए। सबसे पहले आ गया सब्सक्रिप्शन, कितना 56,400। It is the amount of subscription received during the year, and in this subscription you have to do the adjustments which I have told you just now. Subscription of the previous year will be subtracted, outstanding, and outstanding subscription of the current year will be added. So you see this treatment is done or not. Subscription outstanding of the previous year which is received during the year but it is not of the current year, so it is subtracted, and subscription outstanding of the current year, it is added because it is yet to be received. It is the income of the current year. Then next is interest 300, donation 6,000. Donation for building fund is not shown there. Why? Donation for building fund is not shown in income and expenditure account. Can anyone tell me why? Sir, because it is specific donation.
Yes, very good, because it is a specific donation. I told you any donation which is specific, जिसके साथ भी लिखा हो कि ये डोनेशन एक पर्टिकुलर काम के लिए है, that will be treated as capital receipt and it will be shown in the balance sheet liability side, closing balance sheet. You can see in the closing balance sheet में ये show कर रखा होगा, donation for building fund, closing balance sheet में देखिए on the liability side it is shown. What is not shown in the income and expenditure account, all the capital receipts which are not shown in the income and expenditure account are shown in balance sheet liabilities side as capital receipt. The 5 items I have told you: legacy, endowment fund, life membership fees, specific donation, entrance or admission fees. If it is written, it is to be capitalized. They will be shown in the balance sheet liability side because they are treated as capital receipts. उसके बाद miscellaneous receipts है और sale of grass है. तो प्रिंसिपल आप देख रहे होंगे, तमन्ना, जो भी चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में है, वही चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आपको शो करनी है. किसको छोड़ के? स्पेसिफिक डोनेशन फॉर एनी फंड और लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडाउमेंट फंड, entrance or admission fees if it is to be capitalized. This point you have to keep in mind while doing a numerical. उसके बाद आ जाइए पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो देखिए पहली पेमेंट क्या है यहां पर? मैच एक्सपेंसेस, जो कि नहीं आएंगे क्योंकि मैच फंड दिया हुआ है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएंगे. उसके बाद है आपका रेंट, उसके बाद है सैलरीज. खुशप्रीत, सैलरीज में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर वाली एक माइनस, करंट ईयर वाली प्लस. आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम जैसे आप पहले करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो एडजस्टमेंट हम करते थे वही एडजस्टमेंट इसमें भी करनी है. प्रीपेड माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, ऑल दैट similar type of adjustments will be done in income and expenditure also, so there should not be any problem. Then there is sundry expenses, newspaper, and there is also depreciation 20% on furniture and 25% on sports equipment. When you do this, afterwards you have to sum income side and expenditure side. Excess of income over expenditure is known as surplus. और इसमें क्वेश्चन में आपका देखिए आंसर आ रहा है surplus 11,780. After this, we will make closing balance sheet, and in the closing balance sheet, the first item you see cash in hand 18,780, जो कि आपका आया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से. क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये वाला बैलेंस आपको इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है. इतने पैसे हमारे पास अभी है. उसके बाद बाकी चीजें आपको पता ही है, इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इस साल के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इधर जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड निकाला था वो कैपिटल फंड लिखेंगे और उसमें सरप्लस जोड़ेंगे. और बाकी आइटम्स जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं उसमें अगर कोई चेंज आया है, असेट्स में कोई डेप्रिसिएशन लगा है तो डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे, राइट. कोई लायबिलिटी आपने पे कर दी है तो उसे नहीं दिखाएंगे. अदर थिंग्स रिमेन सेम. सो व्हेन यू डू अ फुल लेंथ क्वेश्चन ऑफ एनपीओ, दिस इज द मेथड और प्रोसीजर. आफ्टर डूइंग 15 or 20 questions you will find them easy. They are similar to trading and profit and loss account, and balance sheet is also similar. The thing is that you have to do the adjustments, you have to know the adjustments, the treatment of various items,
and it will be very, very easy for you. All those who have joined the class today, your attendance is taken. Those who have not joined, motivate them, ask them to join the classes, because very importantly, this chapter is very, very important. What is done in the online will be done, and it will not be repeated afterwards. Only at the time of revision we will be able to do it. Time is less and we have to do a lot of things. So be regular from today on to today onwards only. Ask them from tomorrow. Next class will be in the fourth period. I have given you the timetable. I have told you that every day it will be second period and fourth period. On Tuesday and Wednesday it will be fifth period. Timing you know of different periods. It starts from 8:15 every day and 40 minutes each period. So you should be smart enough to know the timing of each class. Timing of each class. Every day I will not tell you the time, nor I will send you the link. Same link you have to follow every day. Same link. Right? I will not change the link. Same link you have to follow every day. So come back for the accounts business class. Any question, any queries, keep doing your questions in the fair notebook. Anytime notebooks can be checked, can be asked. So you keep ready your notebooks, keep ready your every work, be ready for exams, be ready for the tests, because though the situation is not good right now, but rest assured this will be very much okay by next 2 to 3 months. Once the vaccination starts next month, everything will be under control. Don't you worry. But by the time, keep yourself at home, be safe, take care of yourself, and in turn take care of others also. I hope everybody is keeping well. Raise your hands. I hope your parents are well. In your family, everybody is fit and fine. Everybody, raise your hand. Everybody in the family is fit and fine. Mother, father, brother, sister, uncle, everyone. Very good. It is a very good news. You also take care of yourself, and also see that you don't go out. Please don't go out unnecessarily. Don't meet anyone. Follow all the precautions. Take all the precautions. We are lucky enough that we are still alive. We are very, very lucky enough. So just take it as a blessing, and concentrate on your studies. Involve yourself in studies so that you do not have free time to think of odd things. Right? Don't get depressed. It is a blessing that we are still there. It is a blessing that we are able to see each other. Very soon this time will go and we will be back to normal classes. Till then, take care of yourself and come back for the next class. Thank you. God bless all of you.